Hello and welcome. Since you are class 10, all of you, and this is a live streaming program. Many are watching live from outside the Zoom, and also many others will watch after the program is over because it is early morning time. It's Sunday. So I welcome you. This is SS Tripathi from the YouTube channel SST Chemistry. And today's program will be an intensive revision and discussion, question answer session on static and current electricity. So for the first 30 minutes, I will be presenting before you the entire aspects of these things to brush up your memory. I will be telling mostly in English because you guys will be going to 11th class in which the mode of communication will be English. And you are almost in the brink, in the verge of a transition from Odia medium to English medium, those who are from Odia medium. So I won't speak fast. I will speak slow, but mostly in English. But sometimes when it will be required to make you understand better, I will use Odia. Don't worry at all. So let's start without any further delay. I hope you have already come prepared with this topic. And you will see how interesting questions have been already posed by one of you, Pritam Das from Balasore. That has made me upgrade the level of discussion, including some laws which are taught in class 12, but they are very handy, very simple. You can understand it without any difficulty. Now, let me share my screen. And are you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Yes. When we talk about static electricity first, because that is not much in your course in class 10, but you must have a knowledge, sound knowledge about static electricity. Whenever there is more and more attractive force between two unlike charges, the potential energy decreases and vice versa. When the repulsive force increases, the potential energy increases and vice versa. Obviously, due to two like charges, there will be repulsion. And when the repulsion increases as they come nearer, the two like charges, the potential energy increases. I just tell you in this diagram, supposing this is the static positive charge plus Q, and this is a test charge small plus Q. It is going close to the static charge. Now more and more repulsion will happen and work will be done on the moving charge. And when work is done by an external agent, then it is a negative work. Remember, I'll ask you, the sign convention for work is when work is done on a moving charge, a charge, then the work sign is negative. And when the work is done by the charge of its own spontaneously, then it is positive. That is the sign convention in physics that is followed.
Now, as you bring near to the big charge, static charge, there will be more and more repulsion, and the work done on that charge by you, it is stored as potential energy. The moment you release it, leave it at some time, it will automatically be going away from the positive charge. And at that time, the work will be done by the charge and it will be positive charge. The opposite thing will happen when you have a negative charge as the test charge. Usually in physics, we explain everything by taking a positive test charge. But I will give you the concept so that you have no difficulty in having a real concept what is happening really. When you take a negative charge and bring it near to a static charge, positive charge, then spontaneously this will move because of more and more attraction. As it will come nearer and nearer, more and more work will be done by it. So the work will be positive and there is a decrease in potential energy. That means if you want to take away from this plus Q, the minus Q charge won't go of its own. It needs an external agent to drag it away. That is why it has less, its potential energy has decreased, so that you have to apply external energy to drag it out of or away from the charge. So this is the sign convention I have already told you. When work is done on is negative charge on. Bahya karaka jodi ka upare karya karagala, bahya karaka on मन रखिया पे सुविधा on गोटे मन रखी देले सब हो n टा होज negative. On is a negative work. So it is when it is by the charge attraction hobo किबा repulsive force कमी जीवो छाड़ दबो जदी से it will come away of its own to relieve its repulsion, that it does the work of its own, then it's positive work. And the potential energy is just the opposite. The potential energy is minus W. So the work done is negative. That is work is done on, then potential energy is positive. There is an increase in potential energy. If the work done is negative, positive, is done by the charge, then, when the work is done by the charge, there is an attraction, then it is positive, but potential energy becomes more and more negative. Just listen for 30 minutes. Then we shall enter into a very, very meaningful interactive session. Anybody watching from outside, please write some chart so that I will know that you are watching from outside. Let me do one thing. Disable annotation is important because who knows, somebody will try to annotate. Now, when you bring a charge from infinite distance, asima durataru jetebale anibo, then and bring it to a certain point, then that is called the absolute potential at that point with respect to this charge, right? But when they are nearer and you are moving from a point A to point B, so the change or the difference in potential energy is the work done from A to B. And when it is a case of more and more repulsion, work is done on the charge, so it will be negative, and there is a negative sign to correlate between. Suprabha, madam, good morning, but maybe in the name of Suprabha Naik, his hero son is there.
I am forgetting his name. What's your name, Baba? Okay. Now, just watch how we are evolving the topic. And when we are taking a positive charge closer to a positive charge, then the potential energy is increasing. It becomes more and more positive because work is done on the charge and it is a negative work. And the work is negative means the potential energy is positive, or change in potential energy is positive. But if we bring the charge B to A, you did not have to do anything. तुमे किछि करिबा को पड़िबोनी ताको सेठी छाडी दियो, B रे छाडी दियो, से मन को मन रिपल्सन हबो पळी रिपल्सन विरुद्ध रे तुमे नउछ, तुमे काम करूछ चार्ज ऊपर, तेणु it is a negative work and therefore the potential energy तार उल्टाटा बढ़ुछि. किंतु सेठ छाडी दियो, से मन को मन पळे आसीबो, and it is done by the charge, it becomes a negative work. And sorry, it is by the charge, I'm so sorry, it's a positive work, and there is a minus sign, and this will be negative. So there is a decrease in potential energy when it moves from B to A, and increase in potential energy when it moves from A to B. I think I'm clear. Then I will talk about the Coulomb's law. Between two charges, maybe like charges or maybe opposite charges, whether it is attraction or repulsion, that will be known, either it is plus plus repulsion, minus minus also repulsion, plus minus attraction. Now, the magnitude of the charge, magnitude of the force, whether it is attraction or repulsion, as you know, is directly proportional to the product of the two charges, magnitudes of charges, and inversely proportional to the square of the separation or distance between them. And this is a constant, and in SI, the constant is 1 by 4 pi epsilon, and that is called permittivity of the medium. The medium is usually air or vacuum, and we usually write epsilon naught because charges. But when the two charges, static charges, are kept in between, say, a graphite or a glass, so the medium changes from air to other medium, say glass, or some ceramic packing lies between the two plates, static electricity carrying plate. That case, epsilon will be more. Epsilon is a property which tells you to what extent it reduces the force of attraction between the two charges, attraction or repulsion between the two charges. If epsilon is more, then the force will be less. Therefore, it is inversely related to epsilon, right? But usually for our purpose, we'll take naught. Means it is the two charges are kept in air at least. Air and vacuum, they are very, very close. And water is 80 times relatively more permittivity than air. That means when you put the two charges under water, the force of attraction or repulsion will be reduced by 80 times. That is the relative permittivity, which is called the dielectric constant. So when you multiply E naught with the relative permittivity, how many times it is more than E naught, that product will become equal to the absolute permittivity of that particular medium. Now we'll take this value 1 by 4 pi epsilon naught 8.9 in 10 to the power 9 Newton meter square per Coulomb square. Epsilon naught is this much, and its unit is the opposite. And when we integrate, take the sigma, because the line may not be a straight line. If it's straight line, you can draw, and
find the area of the trapezium, you can do it. But often it is non-linear. So you have to make an integration, taking small difference in the distance, and then integrate through a particular limit, lower limit and higher limit. And in a class 11, you will know the rules of integration, and the integration xn dx is xn plus 1 by n plus 1. N is the power, and it has some restrictions. Forget about it. And on integrating this force, because you know work is equal to force into distance, take a small distance and integrate through a large range, you will find this work is minus, because r to the power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. So a minus sign will come, and the power factor will bring it down. So it will minus kq by r, that is work done. And since u or delta u is the negative of work done, so this will be positive. So the potential energy, or the change or the difference in potential energy, is k, that is 1 by 4 pi epsilon. Q is one charge, small q is the other charge, and r is the separation between them. The r square is now r while we talk about potential energy or work. Work has a negative sign and u is a positive sign. But this u can be negative depending on q dash sign. U can be positive, u can be negative, but general expression of u is plus k q by r. What we call it hala vibhava shakti. Potential energy hochi vibhava shakti. W hochi karya. Charge द्वारा करा जीवो positive, charge ऊपरे करा जीवो negative. Now वर्तमान जीवा विभव. विभव शक्ति टा विभव potential होची unit test charge पिछा जेतिकी potential हला गोटे point रे infinite distance रू सेटा होस तारो absolute potential at that point. UA by Q. Since U sangare W ro relationship ulta, minus W by Q. सेमती आमर तो इनफाइनाइट डिस्टेंस रो आमे आणुनु दीटा पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड रो दीटा पॉइंट भितर आमे करूछु ए बी, ए रो बी को आसी. That means the potential of B minus potential of A, final minus initial. That is also same K QQ by R. Q टा तळे रहिला, so QQ कटि गला, टेस्ट चार्ज टा मूव करूची, टेस्ट चार्ज टा एटा स्थिर अछि, तो KQ by R हे गला. This is the potential difference between 2 points where small q is being brought from A to B, and the work done is KQ by R, and potential change in potential energy is KQQ by R, and divided by Q per unit charge, that becomes potential energy. This is potential energy, change in potential energy, and by Q is the change in potential or potential difference. We usually don't write delta V, we simply write VAB. VAB means it is VB minus VA. VBA means VA minus VB. Now look to a question that we did. I have given in the description box, I have given all the previous videos, 8 videos that we have made, 1 for static and 7 for current. The video links are there in the description box of this video, you will find. And those who have not seen them, watched them, studied them, they can go through and then clarify their doubts. But today's program is an interactive program. I am now brushing off. It's already 15 minutes. So another 15 minutes I will take to complete the brush up program. Then you will enter into numerical session and some questions I will invite from you. We are joined by Aratrika and Rudra, Rusikesh and Pondasar, Pritam Das, Rajiv Lochan and Om Sai.
Now this question we have done in that video, in the previous video, when 5 nano coulomb gote charge fixed अछि हला मु कहि दउची to save time आ गोटे +3 nano coulomb charge एटी थिला ताकू छाडी दिया गला छाडी देला माने से मनुकु मन पळेबो बिकॉज रिपल्सन अछि मनुकु मन छाडी देला माने मनुकु मन पळेबो टू रिलीव द रिपल्सन कमिला एटा मन रख जते बेले निजे से कार्य कला बाई माने पॉजिटिव वर्क टा जदी पॉजिटिव हैला ताले पोटेंशियल टा नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस टा बिटवीन A and B will be negative. There is a decrease in potential energy and hence decrease in potential energy and potential, they are directly related. So तार साइन जहा आर साइन सेया किंतु वर्क रो साइन V रो साइन एवं U रो साइन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल डिफरेंस बा पोटेंशियल एनर्जी तार साइन समान पोटेंशियल एनर्जी रो पोटेंशियल रो किंतु वर्क रो ऑपोजिट. So एठू गला माने work is automatically done by so positive work negative potential energy, so potential difference is also negative. Now let's visualize that. UB minus UA, UB होची KQQ by R. I am talking of energy. मो voltage को आसिनी energy से पचार चेटी what is the how much electrical work will be done. आगो potential energy बाहर कर दबा किबा work minus रु मो दी प्रकार देछि आगो work हेले minus potential energy हेले plus तेणु जोटा तुम यूज करियो आगो जोटा बाहर करियो तो पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस मध्य करा जायछि आमे आगो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस बाहर करले UB होछि KQ by R और UA होछि QQ by R. एटा फाइनल 0.15 एटा मुळुरु एटा 0.1 मीटर रे करा हला एटा सेंटीमीटर रे देछि. सो डिफरेंस नै गले UB minus UA. सो एटा कॉमन चली गला एटा k रो फैक्टर तुम जानिछो 1/4 pi epsilon naught एटा हमें देई देले Q दीटा को नैनो माने 10 to the minus coulomb minus 9 coulomb दे देले एंड एटा ऑटोमेटिकली माइनस बाहरला. सो डेल्टा U टा नेगेटिव बाहरिबो ही बाहरिबो. वर्क इज डन बाय द हेला माने वर्क टा पॉजिटिव एवं पोटेंशियल एनर्जी टा नेगेटिव बाहरला. तेणु मु जेहेतु आगो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस टा बाहर कली संगे संग वर्क डन विल बी पॉजिटिव तार उल्टाटा हे जिवो एटा बाहर करथिले माइनस करथांता आगो W टा एटा माइनस प्लस बाहर थांता पोटेंशियल एनर्जी चेंज टा बाहर थांता नेगेटिव हमें उल्टाटा कले एंड से पचारछि ताले कोन हबो पॉइंट B को आसी गले तार कोन हबो तार एनर्जी कोन हबो ना सबुतक पोटेंशियल एनर्जी जहां थिला गच्छित सेटा काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हबो. एति की जो पोटेंशियल एनर्जी कमिला दैट विल बी प्लस काइनेटिक एनर्जी एटा कमिला तार विभव शक्ति जोटा ग्रेविटेशनल इयर ताको हमें स्थितिज शक्ति कहू एठी आ स्थितिज शक्ति नाही अर्थ रो सी लेवल अनुसार करू हमर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अनुसार हायर लोअर करछे तेणु आको कहंती विभव टू मेक ए डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमें ताको विभव पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ओडियर ताको हमें विभव करछु हमें माने लोक माने करछन्ते. सो हैला सो काइनेटिक एनर्जी रे कन्वर्ट हो. आ गोटे देखो ए गोटा भी करथिली गोटे स्टैटिक प्लस चार्ज अछि फिक्स्ड आ गोटे चार्ज तमे निजे जानि परिबो कोन तारो गोटे पॉइंट रे तारो एब्सोल्यूट पोटेंशियल 50 थिला एब्सोल्यूट माने इनफाइनाइट डिस्टेंस रे टिक आसला बेलको 50 वोल्ट थिला एवं तारो वर्तमान B को आसिले तारो हे गला 120 वोल्ट ताले इंक्रीज हला जदी पोटेंशियल इंक्रीज हला माने पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हला ता माने ए टेस्ट चार्ज ता निश्चय पॉजिटिव एटा जदी पॉजिटिव अछि एटा पॉजिटिव न होले तार पोटेंशियल एनर्जी बढ़िवार नाही. सो वर्क इज डन ऑन हला माने नेगेटिव वर्क एंड पॉजिटिव पोटेंशियल एनर्जी. सो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ीची पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल वोल्ट देछि माने पोटेंशियल 50 रु 120. सो पोटेंशियल डिफरेंस टा केते हला 120 - 50 70 होची पोटेंशियल डिफरेंस
So since delta U is equal to V into Q, or V is equal to U by Q, so delta V is equal to delta U by Q. So Q re ame जो चार्ज टा आसुची तार वैल्यू देची 1.5 कूलम चार्ज मूव करूची तो जदि चार्ज रो मैग्नीट्यूड हमें गुणी दो ताले डेल्टा यू टा बाहरी गला 105 जूल वर्क हैज बीन डन ऑन द चार्ज्ड पार्टिकल तबे जदि डेल्टा यू टा पॉजिटिव हैला डब्ल्यू टा तार उल्टा टा सो डेफिनेटली वर्क डन ऑन द चार्ज वन इट्स अ नेगेटिव वर्क ओ एन माने नेगेटिव अच्छा से पत्र जदि सेटा उल्टा हबो से पत्र इफ द मूविंग चार्ज इज नेगेटिव ए चार्ज टा जदि पॉजिटिव न होई कि नेगेटिव ताले से तो मन को डेई पड़िबो मन को टणा हे कि जीवो तमे हाथ मारियो को पड़िबोनी so since the work will be positive work because work done by the charge is positive work to the positive so definitely there is a decrease in potential energy potential energy कमी एठी के पळे आसले potential energy Sir, your voice is not audible. that means I have to drink CPEC. Now audible. Oh, yes, Brahma. Yes, welcome, Brahma. Yes, I used to say Brahma should remain amidst his two other colleagues, Shiv and okay, Brahma ka colleague and Vishnu. You are the creator of the universe. Devidat. Okay. Now, am I audible? Yes. Okay. Now, so if this will be negative charge instead of positive, it will be automatically attracted and the work will be positive and hence the change in potential energy will be negative. So you need not have to calculate, everything is same and prathamaru joda 50 thila seta minus 50 automatically and joda mane badhu thila seta kamibo seta minus 120. So minus 120 minus 50. So change madhya delta V madhya volt अनुसारे भी negative minus 70 volt बाहरिबो एवं डेल्टा यू मध्य नेगेटिव बाहरिबो किंतु काहे कि ना डेल्टा यू और डेल्टा वी they are sign wise directly related, they are not same because one is an energy, the other one is the volt, that is the energy per unit charge. So but sign is same and work will be opposite. Now same concept we can use for current. When you connect between two spheres having two static charges, one is positive, the other one is negative, you will find spontaneously electron will flow from the negative sphere to the positive sphere. But unfortunately, physicists, they have made a convention at that time when electron was not discovered, proton was not discovered. At that time, Fleming had made a lot of rules, popular rules, and that was applicable for versatile areas. Therefore, they continued to have a convention, though it's not true, but we have to accept the convention and study physics. What? That it is the flow of positive charge, which is absolutely incorrect. Protons are static in their nuclei and only electrons are moving. But we say that the current direction is opposite to the direction of the flow of electron. So if you believe, just imagine, not believe,
Imagine that a positive charge is flowing from a higher potential because there is a lot of repulsion here. So the potential is high here. And when it goes nearer and nearer to negative plate, negative sphere, more and more attraction. Means there is a decrease in potential. So higher potential to lower potential, the positive charge will move spontaneously. And if I ask you a question, oh, electron moves from which potential to which potential, higher to lower or lower to higher? Anybody? Raise your hand. Lower to higher. Now this I do Sir, not, it is lower to higher. Panda Babu, I do not recommend at all. This is a wrong concept. We say in terms of positive potential, the electron moves from lower positive potential to lower higher positive potential. But electron is a real charge. And it is a repulsion, a lot of repulsion is here for the electron. So for the electron, it is got a high potential energy, positive potential energy, high. And here there will be automatic attraction. And here the potential energy will decrease. So the real concept is the electron also moves from its higher potential to lower potential. But since we have accepted the convention of proton flow or positive electricity flow, therefore we sometimes wrongly say that the electron moves from lower potential to higher potential. Lower potential of whom? Lower positive potential to lower negative, lower positive to higher positive potential. Only potential will be misleading. But when we say, when we teach the students that electron is moving from a lower potential to higher potential, we have to give the concept that it is moving from lower positive potential to higher positive potential. But if you say potential, electron has a higher potential near the negative electron and a lower potential at the positive electron, it is also moving from a higher potential to lower potential. I think I am clear. Excuse me, sir. Yes. Sir, actually, negative charges were there. We conventionally we are taking that, yes, that is the negative charges means they are lower potential, and positive one is the suppose higher potential. That's why conventionally we are telling that electrons is moving So from are you negative. telling something? Are you telling something different what I said, or are you trying to rebut me, or what you are doing? What is your interest? Two things. Are you Nothing, telling sir. something different from what I said, or you are rebutting me that I have told something wrong? What No, is? sir, you told there is one case that is also right. Okay. You don't try to And teach me here, please. I have not asked you to okay. teach me. If I am wrong somewhere, you can say that I don't accept it, right? So please do Okay, not sir, waste okay. our time. I said very categorically, candidly, that truly electron moves from higher potential to lower potential, higher potential of electron. Otherwise, it can't move. It cannot move spontaneously if it is not from a higher potential, just like water. The gravitational potential water spontaneously falls from a higher potential to a lower potential. Similarly, if the electron is moving freely of its own, then it is definitely going from a higher potential to lower potential according to the real concept. But just like we are telling wrong due to convention that positive charge is flowing from a higher potential to lower potential, current direction is opposite to the direction of electron flow. That is why we are saying that electron is moving from lower potential to higher potential. But whose lower potential? It is the positive lower potential with respect to positive charge. With respect to positive charge, it is lower potential. And with respect to positive charge, the left side is higher potential. So electron is moving from a lower potential to higher potential. When we say, we must remember that with respect to positive charge, it is at a lower potential. But the statement is absolutely wrong, right? So my passion is physics. So when somebody will try to, debate with me, must give
100 times thought before he or she wants to debate with me. Because yes, I am an expert in chemistry, no doubt, but I have a passion in physics. So I told you the concept. Now, what I'm saying is, electron, as you know, is a very, very lethargic fellow. It moves in a very, very small, low speed called the drift velocity or the Bahito Bego. And we will talk about Bahito Bego later. We'll talk about current. I is equal to Q by T. And this is ampere. Coulomb per second is ampere. And Ohm's law is not new to you. As you continue to increase the voltage, accordingly current will be more, and the proportionality constant is the resistance of that resistor that you are giving, right? So PD is the vibhavantara, that is the potential difference between the 2 points. It is called PD, or sometimes funnily called voltage. And R is the pratirodha, resistance. And you know R is equal to V by I. And if you keep voltage constant, then I and R, they are inversely related. More is the resistance, less is the current drawn from that battery or cell. And if you draw a graph between V and I, the slope will be R. If you draw the opposite, I versus V, the slope will be 1 by R. Most of the books, you will find I versus V. So 1 by R is the slope. And if you increase the temperature, the I versus V graph will go down and down and down. Because 1 by R will be less. The slope will be less, then 1 by R will be less. And therefore R will be more. As you know, temperature is directly proportional to pratirodha, because you know, the amplitude of vibration of atoms becomes more. Ayamota body gole atom manankara jo vibration kampana, so that electron will be obstructed, the flow of electron will be impeded, obstructed, so resistance will be more and temperature will be more. That's why the non-ohmic resistor, like the filament bulb or like the semiconductors, they are very susceptible to temperature change, so they do not show a linear relationship. Their graph, I versus P graph, goes on decreasing, because the slope of the tangent at a particular point will give you the instantaneous resistance, and that goes on decreasing 1 by R. So R will be increasing, right? So for series connection, as you know, that the equivalent resistance will be sum of all these resistors, and the voltages will be also shared. And in samantarala sanjoga, it will be 1 by R. Equivalent is equal to 1 by R1 plus 1 by R2, 1 by R3. And the current will be distributed according to the resistance, inversely related to a resistance. More is the resistance in a particular side, less is the current. Now, these questions are very, very trivial to you. Just I am almost at the last part of my revision program. So this, the effective resistance, this will be series connection, 6 plus 6, 12, and this 12 and 6, they are parallel connection. So I have got 1 by equivalent resistance is equal to this. So equivalent resistance is the reciprocal 4. Similarly, in this case, you know, this one, and this one, they are connected to the same 2 points A and B, right? So you take 3 plus 2, 5, 3 plus 2, 5, and 1. So these three, they are in parallel connection. So 1 by 5, 1 by 1, 1 by 5, that is equal to 1 by equivalent resistance. So the reciprocal 5 by 7 will be the equivalent resistance between point A and B, right? Similarly here, let us reduce this first. Now this 3 plus 3 plus 3 is 9. This 9 and this 3, they're in parallel combination. So 1 by 9, 1 by 3, and the reciprocal 9 by 4 up to this. This is reduced to 9 by 4. Then 9 by 4 and this, they are all in series.
So add 9/4 plus 3 plus 3, then that will give you 33/4. And you know the electrical work is minus the change in potential energy. And since spontaneous work is done from a higher potential to lower potential, so the change in potential or potential difference has to be taken negative. Potential difference, the positive charge, that is the confusing point. The physicists have no right now to change the concept, because all the versatile rules have been based on the flow of positive charge, which is a misnomer, right? So higher potential or lower potential with a positive charge, so delta V will be negative. So negative dele negative positive hele kon hela na work done will be V into Q, right? And work done during an electrical flow of positive charge or actually negative charge, doesn't matter. That is V, the potential drop, into Q, and Q is equal to IT. So work done is equal to VIT, or in place of V, we can write IR, so it becomes I square RT. That is the total energy. That so for all practical purposes, we unless otherwise stated, तुमे ताको heat धरिबो. Work, all the electrical work is almost converted to heat. किंतु प्रकृति रे सब प्रकार एनर्जी को कन्वर्ट हबो, सम ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी. बट हमें यूजुअली हीटिंग इफेक्ट को नहीं जाऊ, और यूजुअली हमें लाइट देखुनी, अनलेस इट इज अ फिलामेंट बल्ब वेयर रेजिस्टेंस इज वेरी हाई. सो some a part of energy is converted to light energy. Heat is 5000 degree, सेतेबेले automatically black body radiation तो बड़ हले पड़िबो, then the color will be more and more bluer. The hotter it becomes, the bluer it becomes. You will know that in black body radiation. Now I square RT, interesting जिनसो देखो, मार्क करो, जेतेबेले R and T constant रखिबो. Supposing you are in a series connection, R tag constant achi, right? Setabele the heat energy that will be dissipated out of the electrical work will be square, is proportional to square. The current diguna badila, heat energy 4 guna badila. And if current is same, resistance change color, then it is directly proportional. But on the other hand, tama jodi I jagare V by R put karibo, equation ta hijo V square by R. This is a very, very important reaction, equation. Very, very. Why? Because if you keep voltage constant, particularly in parallel connection, you have voltage constant. In that, heat dissipated is inversely proportional to R, because here the voltage is constant. So not that every time heat dissipated is directly proportional to R. No. If I is constant, but when V is constant, I's are changing. According to resistance, the I's are changing. So therefore, the heat dissipated is inversely proportional to the individual resistance. The voltage remains constant. And power is the rate of doing work, W by T. So 1 T get cancelled. So I square R or V square by R. So it is joules per second is watt. Usually we write in horsepower, 746 watt, and work done is usually expressed in kilowatt hour. And 1 kilowatt hour is, kilo is 10 to the 3 and hour is 3600. So it becomes 3.6 into 10 power positive 6 joule. That is 1 kilowatt hour. Now, every electrical appliances, boidutiko upakarana manakar gote मान थाए. सेतेरे लिखा ही था 500 वाट 220. तामाने ताकू जदि 220 वोल्ट रे चलेइबो ताले से एतिकी पावर कंज्यूम करिवो.
पावर माने वर्क पर यूनिट टाइम गोटे सेकंड पिछा एतिकी जूल से नष्ट करिवो सो मु जदि गोटे कहली गोटे इलेक्ट्रिकल केटल ता ऊपर लिखा है 500 वाट 220 वोल्ट ता ऊपर लिखा है ताको 30 मिनिट तुम चलेल वाटर हीटिंग करबा पई किंतु 220 वोल्ट रखिल कांस्टेंट तुम वोल्टेज स्टेबलाइजर अछि रखिल तार हीट केते प्रोड्यूस हला एथरे तुम मन रखिता काहे कि मु एटा इंपोर्टेंट कहली v²/r इज वेरी इंपोर्टेंट very important because by that you will know immediately power देजी so resistance जानि पारलो से पर्टिकुलरली जो इलेक्ट्रिक केटल जो एलिमेंट तार रेजिस्टेंस ता भारी गला एतिकी म ताको सिंपलीफाई करिनी वोल्टेज देजी पावर देजी सो इमीडिएटली रेजिस्टेंस भारी गला तापर हीट v²/r करो किबा vit करो किबा i²r करो जहा करो जोटा तुम देजी सो v²/r into t t टा होची 30 सेकंड सो एतिकी 15000 जूल बा 15 किलो जूल से खर्च करिछि 30 सेकंड रे राइट सेटा को मध्य तुम किलोवाट आवर रे कन्वर्ट करि परिबो गोटे किलोवाट आवर रे जदी चार्ज करूची आजिकली केते करूची 6 टंका 20 पैसा ना केते पैसा 3 टंका रेट रे गोटे अंक देइची जदी टाउन सप्लाई गोटे किलोवाट आवर को जदी गोटे यूनिट होची गोटे किलोवाट आवर को जदी 3 टंका चार्ज करे ताहले गोटे फैन बुलिबो 80 वाट रो गोटे फैन बुलिबो 10 घंटा ताहले केते पैसा तुमको दबाको पड़िबो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट को तो वर्क डन इज इक्वल टू p into t पावर देची 80 वाट टाइम दे देची 10 घंटा को मु सेकंड कली ताको संगे संग 3.6 10 टू पॉजिटिव 6 रे हरिले आमे को एतिके किलोवाट आवर बाहरला सो गोटे किलोवाट आवर माने गोटे यूनिट से 3 टंका यूज करूची ताहले मात्र 74 टंका 40 पैसा खर्च हो आई डाउट माने एते कम पैसा नाही प्रथम आडू कोन 3 टंका 4 टंका एमती कोन अछि सो से जदी 24.8 यूनिट यूज करिवो बा किलोवाट आवर यूज करिवो ताहले मात्र 74 टंका 40 पैसा दबो यू नो ब्राइटनेस ऑफ ए इलेक्ट्रिक बल्ब it is is directly proportional to its power series connection हले डिमर हे जीवो तार ब्राइटनेस कमी जीवो एवं ता भितरु जोटा लोअर वाटेज थिवो तार ग्लोटा अधिका हो दी जनकर कमी जीवो कैलकुलेट करी देखिबो किंतु जोटा लोअर वाटेज तार तार ग्लोटा बढ़े जीवो पैरेलल कनेक्शन हले ओवरऑल ब्राइटनेस बढ़ी जीवो एंड ता भितरे जोटा हायर वाटेज तार हायर ग्लो तो गोटे अंक करके मु देखैछि जे दीटा सीरीज कनेक्शन अछि एवं तार सब रेटिंग देछि ए बल्ब टा होछि 220 60 एटा 220 40 40 वाट राइट वोल्टेज टा मु आगो दे देछि आगो यूजुअली वाटेज टा दिए एनीवे जहां भी हुआ यार रेजिस्टेंस टा बाहर कर देल तार रेजिस्टेंस टा बाहर कर देल करी जेहेतु सीरीज कनेक्शन रे अछि मिसई देली तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एतिकी बाहरला तो करंट जेहेतु 220 वोल्ट रे अछि करंट जाउची एतिकी ताले पावर बाहर कर देली 9.58 आर 60 रो पावर एवं 20 आर 40 रो पावर दीटा जगह पावर अलग अलग बाहरला तेणु जोटा हायर वाटेज रे अछि तार कम पावर बाहरला एंड इनफैक्ट गोटे नेकी तुम देखिवो तार पावर टा अधिका बाहरिबो देन टेकिंग ए सीरीज कनेक्शन सो सीरीज कनेक्शन हले गोटे ठू सीरीज कर दीटा कम हबो एवं दीटा भितरु जोटा हायर वाटेज तार पावर कम हबो फल रे ब्राइटनेस कम हबो सेमती आ गोटे अंक देजी सेटा तुम देखिबो आउ बाहित बेग तुमरो +2 रे पढाबो मु टिके तुमको कहितली गोटे गोटे वीडियो डेडिकेट करची u बाहित बेग इज इक्वल टू I by n aq एटा बाहित बेग ड्रिफ्ट स्पीड I is the current n is the number of electrons free electrons present in one unit volume of that particular conductor जो बटते जाउची a is the area of cross section of that conductor through which the electrons are flowing and e is the electron charge so आमे गोटे अंक भी करथिले अच्छा एई जिंसटा मध्य तुमे पढिचो जे which factors affect resistance material ऊपर डिपेंड करची whether it is any chrome or platinum or an alloy material ro nature ऊपर डिपेंड करची
temperature upare depend koruchi. I told you that many non-ohmic resistors are very prone to temperature change, very prone. But others, they don't change much with increase in temperature, but yes, they will change. Up to certain extent, they will be ohmic, but beyond, when you heat to 5,000 degrees, will it remain as ohmic? No. So to some extent. Now, you already know that this is the thing, and resistance is directly proportional to the length of the conductor, uniform conductor, and A is the area of cross section of that uniform conductor. So L by A, and the proportionality constant is called the resistivity. Pratirodhita agur kuhautila visishta pratirodha. And length body le resistance body, area body le resistance commibo. Mane jo motte area of cross section. So these things you know, and gote anka tar ulta ta hochi conductance. Resistance ulta ta, jodi resistance adhika tale conductance adhika कम. जदि रेजिस्टेंस कम ताले कंडक्टेंस अधिका. कंडक्टेंस रेजिस्टेंस जाई पारुनी, कंडक्टेंस जाई पारुची. सो तारो रेसिप्रोकल कर दियाला. सब गुडा कर रेसिप्रोकल. एटा A by L हे गला. ए 1 by rho को कोनती काप्पा. जेटा होची कंडक्टिविटी. इसी टा होची कंडक्टेंस. So you anko deichi is very simple, you can do it, and this finishes my brush up program. Now I'm sure another 15 minutes Mr. Om. Yes, sir. Are you in perfect focus? Yes, sir. Now see how interesting problems have been given to motivate me. Pritam Das, I congratulate him. I wish he has elevated his level of preparation. Even if you are 2 or 3, I don't mind. But I will take a test on optics and electricity, electromagnetism from physics and chemistry till taught, whatever we have done. Towards the last part, you might have marked, I was struggling with my voice. So premature closure of the camp happened on the 6th day, because, before your camp, I was having awfully busy in Ravenshaw University, but my alma mater, for a very important program. So I spent so much of time, both voice wise and otherwise. I needed a bit of rest, but since you guys are class 10, your time is very important. Therefore, I thought of not changing your time. I changed the time of class 9. Okay, now dekho kete sundar anko se deji, where possibly those who were with me in, like Pritam Das, can understand. Others might not. I am talking of students. Say, gote kinematics, as you call kinematics, sangere gote electrostatics ra misrana hoichi ankare. Dekho sundar ankota. -9 gote charge eti achi eti. Eti gote झुलुथला gote ये रे स्ट्रिंग रे गोटे चार्ज झुलुथला +6 माइक्रोन कुलम, माइक्रो कुलम झुलुथला. नेगेटिव चार्ज ता पाखु आसिले निश्चय टणा हबो, अट्रैक्शन हबो. अट्रैक्शन हैला एई जगह रे इक्विलिब्रियम रे आस रहिला. एई जगह रे इक्विलिब्रियम रे रहिला. इक्विलिब्रियम रहिला बेले को देखा गला वर्टिकल संगे से गोटे एंगल करछि थीटा. तेबे से कहउछि थीटा रो वैल्यू केते एवं ए टेंशन ता केते. कांथ जो फोर्स ताकू टाणुछि कहते टेंशन. आमे हमर 9th क्लास रो ये आमे विभिन्न प्रकार रो फोर्स भीतर टेंशन मध्य गोटे फोर्स, मेंटल टेंशन नो, दिस इज टेंशन. गोटे कांथ रे के गोटे झुलिले कांथ टाणिबो जो रिएक्शन फोर्स सेटा होछि टेंशन. से टेंशन केते पचारछि, वेयर रे टेंशन केते अछि एवं ए एंगल ता केते. आ देखो आमे चार फ्री बॉडी डायग्राम करबा. जेतोले गोटे बॉडी इक्विलिब्रियम रे रहि गला एठी, आउ जाउनी आगु को पछकु उपरकु तळकु जाउनी,
तो जना पड़ी गला जे एटा अनबैलेंस फोर्स आ किछि नाही बैलेंस हो जाई छी। तो आमे कोन करबा ए जो टेंशन फोर्स टाको आमे रिजॉल्व करबा इनटू टू कंपोनेंट्स ए एंगल टा जो थीटा एटा भी थीटा। सो एटा हला तारो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट t cos थीटा ty कंपोनेंट लिखली एटा हला ty sin थीटा tx x कंपोनेंट एंड दिस इज y कंपोनेंट। धर एटा x एक्सिस करबा एटा y एक्सिस करबा एंड थीटा टा जोटा लागि छि सेटा तारो cos थीटा कंपोनेंट एटा sin थीटा कंपोनेंट हला। तो बर्तमान ए t टा को भूली जिबा। तबे एबे ए जो बल्ब टा स्थिर अछि ताकू केतेटा फोर्स एक्ट करूची गोटे कुलम्स लॉ एपटे टाणुथिला से रही छी माने आउ टाणी पारनी बैलेंस हे गला पर ये एपटे ए डायरेक्शन कुलम्स लॉ एपटे एपटे टीएक्स कंपोनेंट ऊपर टीवाई कंपोनेंट आउ तार वेट टा ओजन बलटा एग्जैक्टली ऑपोजिट टू द टीवाई कंपोनेंट। तो जदी यार रिजल्टेंट टा 0 ताहले एक्स कंपोनेंट एक्स रे जो माने अछंती से माने वैनिश करिवे इंडिविजुअली y कंपोनेंट रे दीटा का मध्य वैनिश करिवे। सो tx इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन q डैश बाय r स्क्वायर एंड ty इज इक्वल टू mg। सही कथा मु करछि जे एटा हला फोर्स एपटे टाणुची एवं एटा होची tx कंपोनेंट दैट इज sin थीटा t sin थीटा t होची टेंशन sin थीटा एंड एपटे mg तार ओजन बल संगे ty होची जो t सर आपन को वॉइस सुभा होनी सर आपन वॉइस सुभा होनी सर सुभा जाउनी माने मते नेचर कहूची टिके पानी पियो तुमर गला सुखुची टिके पानी एबे सुबिला यस तेणु नेचर संगे मोर टिके रूबरू जस्ट इन ए लाइटर वेन अच्छी फल से कौन करुच्ची मत चेतई दौची ए तुम पानी पीन टिके तंटी सुखी जाऊँ पानी पियो राइट टाउसी लेट मी रिपीट इट कोट थिला जे गोटे जदि चार्ज हो कि जेकोसी बॉडी हो एटा चार्ज बॉडीटा स्थिर अच्छी इक्विलिब्रियम रे अच्छी ता माने तार अनबैलेंस फोर्स 0 बैलेंस हो जाई सब जतेक फोर्स काम करूची इट इज बैलेंस। देखिबा केतेक कौन कौन फोर्स काम करूची को डायरेक्शन रे को कहंती फ्री बॉडी डायग्राम बॉडी ऊपर को फोर्स काम करूची बॉडी ऊपर चारटा फोर्स ए टी टा को आमे विभक्त करबा दीटा कंपोनेंट रे गोटे होची एटा आको कहंती इनो जेहेतु थीटा संगे लागि छि आको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहंती बट इट इज लुकिंग वर्टिकल डोंट वरी। सो थीटा संगे लागि छि अछि माने दिस इज t cos थीटा एटा एटा t sin थीटा। सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुलम्स बाबा टाणुचंदी एपटे tx बाबा टाणुचंदी एपटे से माने मध्य बैलेंस करिवे बाध्य एवं ty बाबा टाणुचंदी ऊपर पटकू ओजन बाबा टाणुचंदी तळ बाबू ये मध्य बैलेंस करिवे एटा टिके बड़ देखै देउची बड़ नो सेतिकी इंडिविजुअली से माने बैलेंस करिवे। सो मु कोन कली प्रीतम जे ए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टा एपटे थिला एटा इज इक्वल टू t sin थीटा ए कंपोनेंट दिस इज दिस tx कंपोनेंट एवं ओजन mg टा इज इक्वल टू ty दैट इज t cos थीटा। सो एटू t टा बाहर कर देली व्हिच इज mg by cos थीटा। सो t रो वैल्यू टा एठी पकई देली सो 1/4 पाई एप्सिलॉन q r स्क्वायर mg cos थीटा into sin थीटा सो एटा tan थीटा हे गला। सो tan थीटा एटा सब वैल्यू हम जानि छी एप्सिलॉन नॉट q डैश सब वैल्यू देई छी से you know don't put the sign we know it is attraction only magnitude हमें बाहर करबा मैग्नीट्यूड टा। सो हमें पुट कर देले q रो वैल्यू एठी पुट कर देली माइक्रो टा को 10⁻⁶ कली सब सब गुडा एसआई यूनिट रे रखिली एवं tan थीटा बाहरला एतिकी। सो हमें देखि देली tan थीटा टा होची tan इनवर्स एतिकी किबा तुमे कंप्यूटर रे कैलकुलेटर देखि दबो साइंटिफिक कैलकुलेटर रे जे एतिकी रो tan इनवर्स केते थीटा जदी tan थीटा जदी एतिकी हला देबे थीटा इज इक्वल टू तब कहते tan इनवर्स एतिकी sin थीटा जदी समथिंग हला तले थीटा इज इक्वल टू sin इनवर्स समथिंग आजकल तो बाहर लानी साइंटिफिक कैलकुलेटर रे बाहरला 15.4 डिग्री एई एंगल रे से रहिले
रही सो दैट इक्विलिब्रियम रे अछि ता टी केते टी टा बाहर कर दबा टी इज इक्वल टू mg by cos थीटा कि बा सेठी जोठी पकाओ सो टी रो वैल्यू भारी होला द टेंशन दैट इज इन द स्ट्रिंग सो m कार स्ट्रिंग रो ओजन टाकू से नेग्लिजिबल धरछि ए जो बल्ब टा तार ओजन टाकू नेछि एवं दैट इज g acceleration due to gravity 10 by cos 15.4 and the string रे जो टेंशन अछि that is 0.813 न्यूटन राइट बुझिलो रेज योर हैंड्स को माने बुझि पारलो बिकॉज़ यू नो ए क्वेश्चन टा समस्त बुझिबो से गारंटी मो पे देई परिबिनी बिकॉज़ इट विल बी it was meant to be a 1 hour session is we are almost inching towards 1 hour so मंगल शंकर ओझा बुझिले प्रीतम दास बुझिले आउ के बुझिले ओके कोई बात नहीं you watch again and again and you can understand because maybe मु तमरो फ्री बॉडी डायग्राम सेते बेले जो ऑनलाइन जो हे गला सेते बेले I don't know whether I have I not told you Pritam how to resolve a particular vector into two components cos theta and sin theta have I आपण कहिथिले सेता विषय रे any vector can be resolved into two components a horizontal component which is attached to theta and the vertical component which is away from theta so I think I have told you doesn't matter so suprabha I'm sorry brahma babu kahile je sir mu bujili that's great that's you know it's a motivation for me but never mind tu mane na buji parlo this program is meant for little advanced level discussion and maybe when you are equipped with all this knowledge you watch it again now एटा गोटे बढ़िया प्रॉब्लम से देछि जोठी मते बाध्य होई कि तुमको कहबा को पड़िबो दीटा किर्चॉफ्स लॉ वेरी सिंपल वे रे मो कहि देबी किर्चॉफ्स लॉ दीटा अछि किर्चॉफ्स करंट लॉ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कोन जे कोनोसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो एठी दीटा बैटरी अछि दीटा सेल एटार अननोन सेल से पचार जे एटा केते ए अननोन रेजिस्टेंस भी अछि एटा केते आउ करंट केते करंट इन आर ए बाटो देखि केते करंट जाउछि ए बाटो देखि आर बाटो देखि हला अच्छा मु लेट मी टेल यू व्हाट इज किर्चॉफ्स करंट लॉ तो जे कोनसी गोटे पॉइंट नबो जे कोनसी गोटे पॉइंट जोठी दि तीनटा तार जॉइन हेचंती दीटा किबा तीनटा तार छक्कम गोलेई छक्क ताकोंती नोड जे कोनसी गोटे पॉइंट नियो ए पॉइंट नियो ए पॉइंट नियो नोड पॉइंट जतबेले नबो एटा जे कोनसी गोटे पॉइंट न धर एटा गोटे नोड पॉइंट नबा कि एटा गोटे नोड पॉइंट नबा एटा को नबा भलो हबो कारण ए से नोड जे कोनसी पॉइंट रे total charge which is coming into the node should be equal to the total charge which is going away from the node current जति के आसीबो सेति के जीवो गहम गोटी गणता आपण आसीबो 10 टंका तुम खर्च करिवो 11 टंका चोरी करिवो कोठु तेनु एठी देखै छी से 6 आसुची एपटे 4 जाउची एपटे धर आई जीवो कारण एटा नेगेटिव एपटे जीवो धर आई जाउची कारण जाउची ए दीटा जाउची एटा आउची सो आई प्लस 4 मस्ट बी इक्वल टू 6 तला आई केते हला ओ बाबू आई टा जाउची एवं 4 टा जाउची सो आई प्लस 4 शुड बी इक्वल टू आसुची 6 तला आई केते हला 2 एम्पियर हला सो एठु जणा पड़ी गला आई टा 2 एम्पियर एठु जणा पड़ी गला आई टा 2 एम्पियर मन रखि थाओ आ गुटे कहबी किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ कौन तो जे कोनोसी गोटे लूप नियो साइक्लिक लूप नियो पृथ्वी गोल मझरे बाईपास कर 10टा लूप को कि ऊपर बाईपास कर 20टा लूप को जे कोनोसी गोटे लूप नबो एंड दैट शुड कंटेन एन इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ ईएमएफ गोटे ईएमएफ सोर्स रहिबो बैटरी थिबा वाला गोटे लूप नियो से भितरे the voltage generated from the source should be equal to the total voltages inside the loop. The loop भितर जते voltage IR समस्त समान होबो बाध्य किंतु जदी
तुम्हें दे देछि से कोनोसी चित्र रे वोल्टेज रो चिन्ह जोटा प्लस रु माइनस से चिन्ह रे न देकरी करंट रो चिन्ह उल्टा डायरेक्शन रे देछि ताको माइनस करियो पड़ियो ताको माइनस करियो पड़ियो सेठू जना पड़ जीव प्रकृत रे जो प्लेसमेंट जो जो ईएमएफ रो प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव प्लेसमेंट ठीक अछि कि भूल अछि जना पड़ जो बेले बेले भूल प्लेसमेंट हेई थाए ईएमएफ टा भारिबो नेगेटिव ईएमएफ टा नेगेटिव भारियो माने द पोलैरिटी हैज टू बी रिवर्स्ड मोटा अंक एठी देछि से पचारिछि देखो तो चलो ए बड़ सर्किट रे आमे यूज करिबा की लॉ ना किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एटा को भूली जाओ आरो डेरिवेशन ता तमे 12th क्लास रे पढियो आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव दिस हाउ किरचॉफ्स I mean voltage law has been derived no current ता बुझी हबो गोटे साधारण पिला आसुची जेते के जीव सेते के किंतु voltage law पाई derivation अछि and that needs a time so we will not do that खाली एति के मन रखो जे एई सर्किट को यूज करबा एटा को भूली जिबा सो 28 एई डायरेक्शन रे आसुची वर्तमान ईएमएफ रो डायरेक्शन होची एटा प्लस एटा माइनस एटा आसुची यार गला ये डायरेक्शन मध्ये करंट रो डायरेक्शन याडे अछि तेनु एका डायरेक्शन रे अछि सो मु कोन करबी 28 इज इक्वल टू 3 into 6 एटी माइनस लिखि थान जदी एमटी डायरेक्शन दी थांता 3 into 6 अच्छा तापरे यार एटा को भूली जाओ एटू ऑलरेडी हम बाहर कर सलेनी एटी 2 जाउची बिली ऑलरेडी बाहर कर सलेनी करंट नियमटा यूज करकरी आई 2 बाहर कर सलेनी सो एपटे 2 जाउची एपटे देखरी सो 2 into r आउ किछि नाही एटा को हमें भूली जाइछे ए सर्किट ए लूप टा को नउचे 2 बाहर करछे सो प्लस 2 into r हेले ऑटोमेटिकली r टा बाहरी गला केते 28 माइनस 18 केते 10 by 2 5 ओम एटी जणा पड़ी गला 5 ओम दैट इज फिक्स्ड आउ तुम जहा जहा चेंज करो एटा केबे चेंज हबनी 5 ओम एटा 2 एम्पियर एटा चेंज हबो जदी एटा को बुडी दबो कोन कर दबो किंतु रेजिस्टेंस केमते चेंज हबो रेजिस्टेंस तरे बारला माने फिक्स्ड अच्छा चलो ए थरे अप्लाई करबा ए बूढ़ा सर्किट टा बड़ आउ थरे ए सर्किट का अप्लाई करले ईटा बाहर जीवो ईटा अननोन ए सर्किट यूज करले आर टा बाहर जीवो देखो केसीएल माने पोटेशियम क्लोराइड नो कोन केसीएल माने किरचॉफ्स करंट लॉ एटा एल टा कैपिटल एल टा कैपिटल अच्छा मु नोड को अप्लाई करली ए नोड को एक्स नोड रे अप्लाई करले जणा पड़ी गेला आईटा 2 एम्पियर अच्छा चलो केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करिवा टू द बिग सर्किट देन एबीसीडी दे दिथले थांता मु देइनी कले कोन हबो से मु इटी माइनस लिखिछि मु किंतु बुझेला बेल को अलगा बुझेली मु बुझेली E is equal to total voltage generated will be equal to sum of voltages and the proper direction proper sign should be maintained so 3 into 6 plus 4 into 6 एपटे छोट रे नै बड़ रेटा मु छोटटा ए बड़ रे मु एठी कोन कली लेखिली गोटे प्रकार रो किंतु कहिली आ गोटे प्रकार रो कारण तुमे सब भल पिला तुमे एटा को आर सम टा 0 हबो नेट वोल्टेज चेंज विल बी 0 or the voltage generated will be the sum of all the voltages 3 into 6 plus 2 into r कारण current direction same अछि in the direction of the EMF right so it r भारला 5 ओम चलो बर्तन तळटा को यूज करिवा तळटा यूज करले 28 is equal to sorry E is equal to एटा एटा मु कहबिन तुमको कहबी एटा E is equal to E रो डायरेक्शन टा देखो E रो डायरेक्शन टा देखो एटा ताल ठीक अछि 3 into 6 एटा ठीक अछि किंतु एठी आसीबा एटा मध्य से डायरेक्शन रो अछि एका डायरेक्शन रो अछि सो into 4 into 6 so E is equal to 3 into 6 plus 4 into 6 direction एका अछि so E भारी गला 42 so a unknown EMF होची 42 तार पोलैरिटी सेया ठीक अछि इटा भी ठीक अछि आउ तापर पचार डी रे सर्किट इज ब्रोकन जदी ए पॉइंट रे सर्किट टा ब्रेक करि गला त माने यार किछि काम देला नै ए काम न देले ये जो आसुची 6 एम्पियर करंट आउ 6 एम्पियर रहिबनी ये 6 एम्पियर कोन आ संगे यार मिसिकरी ये
करंट पठाउछि ये भी करंट पठाउछि एका डायरेक्शन रे मिसिकरी 6 एम्पियर तो ये पठेइबनी तो ये केते पठेबा हम जानिने सो लेट द करंट इज आई नुआ करंट आसी वर्तमान एटा को ब्रेक कर देले एटा नाही सो वर्तमान 28 इज इक्वल टू मु कहबी उल्टाटा 28 इज इक्वल टू 3 into I एंड एपोटे जेहेतु 5 ऑलरेडी फिक्स्ड 5 into I डायरेक्शन से आज सो 28 इज इक्वल टू 3 into I प्लस 5 into I सो एटा कर देले हमर आसी गला I is equal to 3.5 ampere. So the new current that will flow in the absence of this part will be 3.5 ampere. को माने बुझिला हट्टा को माने बुझिला प्लीज रेज योर हैंड्स ब्रह्मा बुझिलो की well अन्य माने if you are struggling nothing to worry nothing to worry अच्छा आउरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम देछि से संगे संग तुम धर नबो एटा गोटे प्रॉब्लम देछि एबे सब जन नबो देखो केडे बड़ सर्किट से देछि 10 20 60 60 30 ए माने सब पैरेलल ओटा सब ए दीटा पॉइंट रे माने सब पैरेलल तापर एटा गोटे सीरीज रे अछि ये 10 वोल्ट ये 5 वोल्ट अपोजिट डायरेक्शन रे अछि यार पॉजिटिव पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन माने ये कटाकटी हे जिवि so that the circuit diagram को जतबेले तबे रेडी वो पैरेलल रे अछि एटा को ए तीनटा जाको सिंपलीफाई कर देले एटा हबो 20 तो देखो एवं 10 माइनस 5 कर दे 5 रहइबो देखो एटी एतक सिंपलीफाई मु कर देछि ताको कोनते रिडक्शन सीरीज एंड पैरेलल रिडक्शन कर देले एटी कोन हबो आगो आकु बाहर कले ए और बी पॉइंट रे 1/30 ए मिसी गला प्लस 1/60 प्लस 1/60 प्लस 1/30 तार रेसिप्रोकल कर देले एटी 10 ओम बाहरला बिटवीन ए एंड बी ये 10 ये 5 ये 5 तो ये सर्किट रे सीरीज कनेक्शन रे 20 ये 10 ये टोटल टा 10 5 5 20 सो टोटल सी टू डी ए सी रु ए डी पर्यंत 20 होची तार ओम एंड टोटल एटी माइनस हे गला ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि तेनु एठी हमें सिंपलीफाई कर देले एटी 5 को काटी करी पूरा सीधा कर देले एठी 5 लिखि देले बस बर्तमान सर्किट डायग्राम टा वेरी सिंपल हे गला टू अप्लाई केवीएल केसीएल तो बर्तमान चलो केवीएल अप्लाई करिया बड़ सर्किट एमती 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 so 5 is equal to because एटा सोर्स 5 is equal to so देखो डायरेक्शन टा क्वाड अछि ए डायरेक्शन टा उल्टा देछि से तमे ताको रेफ्यूट करि परिबोनी क्वेश्चन रे देछि एटा तेनु एठी माइनस लेखिली डायरेक्शन ऑफ करंट शुड बी दिस बट से देछि एठी then something is played by this सब mischief is being played by this मन देछि काहे सेटा को तमे उल्टी परिबोनी so 20 into 2 minus कली because यार डायरेक्शन उल्टा अछि प्लस एपटे पसिबो ए डायरेक्शन टा सेम अछि एमती सेम अछि so plus 20 into I2 so इठु I2 टा गोटे अननोन थिला एवं मु प्रिज्यूम कली लेट द डायरेक्शन ऑफ I2 इज दिस एमती करथिले नेगेटिव आर थांता तुम इच्छा तुम जदि एमती तुम जानि नंता को डायरेक्शन रे जाउची तुम एमती भी कर दे पारिबो मु एमती कली भाग्य को मोर पॉजिटिव करंट बाहरला माने सेही डायरेक्शन रे जाउची मोर असम्पशन टा ठीक अछि सो करंट बाहरी गला चलो ए नोड रे एफ नोड रे मु केसीएल अप्लाई करिवि आसुची ए पटु I2 टा बाहरी गला 2.25 हाँ नहीं हाँ I1 टा बाहर करिवा वर्तमान जाउची 2 एम्पियर आउ जाउची 2.25 एम्पियर तले आसीबो मध्य some of that so I1 has to come माने जाउची केमती अरे न आसिले जीवो केमती दीटा जाउची सो इठी 2.25 जाउची और इठी 2 एम्पियर जाउची सो I1 इठी उडे कोन 2 लिखि छिबो जी सॉरी एटा जी सो एटा नॉट 2 एटा जी
So I1 is equal to sum of these two. So I1 बाहरी गला 4.25. So इतनी आसुची एवं spread है यो एपटे 2 एपटे 2.5 है गला. It seems that the polarity of E has to be reversed. कारण एपटे आसुची माने इटा सेपटे रहियो. Ultimately एपटे जाउची माने something डाल में जरूर कुछ काला है. धरा पड़ जियो बर्तन देखो केम धरा पड़ियो. KVL अप्लाई करो बर्तन एठी इतनी. E is equal to आमे जानी ने E is equal to एपटे जीवा एपटे पॉजिटिव रो आमे जीवा किन देखले कि उल्टा डायरेक्शन रे आछी. I2 टा बाहर जाई ऑलरेडी. I2 टा होची 2.25 into 20 एवं एपटू जीवा ये मध्ये ऑपोजिट डायरेक्शन रे अछि. ये एमिति आछी. एटा मध्ये माइनस 15 into 4.25 पड़ला 4.25. So ultimately एटा बाहरला नेगेटिव. नेगेटिव रो अर्थ किछ नाही. अर्थ माने पोलारिटी टा भूल देइची उल्टे दियो. एपटे पॉजिटिव एपटे नेगेटिव. तो आंसर हबो 108.75 वोल्ट. बट इट जस्ट माइनस टा को प्लस कर दियो. आंसर हबो एतिके. बट से दैट द पोलारिटी हैज टू बी रिवर्स्ड. एठी पॉजिटिव रहइबो एटा नेगेटिव आसीबो. एंड से पचारची पुणी VAB ए पर्टिकुलरली ए सॉरी एथिरे जो 10 ओम रेजिस्टर अछि सेथिरे केते सेकंड रे 60 जूल एनर्जी खर्च हबो. हीट एनर्जी बाहरिबो. तो आमे जेहेतु ए बी पॉइंट होची पैरेलल पॉइंट. ए बी पॉइंट रे हेटा 10 बाहर थिला. तो वर्तमान 10 यूज करी करी आमे बाहर कर दबा व्हाट इज 10 यूज कली मु एठी एवं करंट जाउची 2 टा हेले सेपरेट कले केते आ भितरे केते करंट आसीबो. 2 टा स्प्रेड हे जिवो एमिति 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 एमिति. so I is equal to V by R. so V होची you know सेटा नो कोड गला हाँ V is equal to केते ना VAB करंट 2 एवं पोटेंशियल डिफरेंस होची केते एंटायर सर्किट रे होची 10. so V is equal to IR. I होची 2 R होची 10. so 20 वोल्ट ए दीटा पॉइंट रे अछि. तबे ये केते एन्जॉय करचुंती करंट देखिबा. so the current which is going to the upper circuit, so that what gala so that is 20 by 30 kind of total upper part रे होची 10 plus 20 30. so upper wire को जाउची 20 by 30 2 by 3 ampere. किंतु आमर इंटरेस्ट होची 10 ओम रो. सो I square RT 10 ओम रो इति होची एनर्जी डिसिपेटेड दैट इज इक्वल टू 60 जूल देइची. R होची 10 पुट करिवा. I होची 2 by 3 सो कर देले 13.5 सेकंड रे 60 जूल ए 10 ओम रेजिस्टर एनर्जी खर्च करिवो. हीट एनर्जी डिसिपेटेड हबो. आर दे नॉट इंटरेस्टिंग? सो नेवर माइंड इफ यू आर this program was meant for those who will come prepared, not meant for those who are not prepared. You can see, you can just watch, and later on also you can watch. I'm sure this program will be watched by many in later time. Doesn't matter. देखो एटा प्रथम बहुत सहज आटा कौन ना दीटा रेजिस्टर सीरीज कनेक्शन हैला एवं तार वोल्टेज हैला 12.5. इतरे 0.5 एम्पियर करंट जाउची एवं सेई दीटार पैरेलल कनेक्शन हैला तार वोल्टेज हैला 6. तबे इंडिविजुअल रेजिस्टर करते तो ऑटोमेटिकली यू कैन एस्टैब्लिश टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस. एटा x plus y और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू 0.5 इज इक्वल टू 12.5. ये गोटे एटा 1 by x plus 1 by y तार रेसिप्रोकल टा होची एतिकी. सो दैट इनटू 1.5 एठी 1.5 एम्पियर जाइछ इज इक्वल टू से देइची 6 वोल्ट. सो ये दीटा साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व कले आराम रे गोटे 20 बाहरची गोटे 5 बाहरची. इज वेरी सिंपल. एटा बढ़िया इंटरेस्टिंग. वी आर जस्ट going to the end of our program. This involves another law called Kirchhoff's law. Called Wheatstone bridge principle. Kirchhoff's law gala KCL KVL मु कहली. एठी गोटे आ गोटे इंटरेस्टिंग जिंस काम करूची सेटा होची Wheatstone bridge principle. So that is very simple.
वेरी वेरी सिंपल सेति पई मु डिसाइड कली जे कहि देबी देखो धर P and Q दे आर नोन रेजिस्टेंसेस आ रेजिस्टेंस तुम जानिछ R टा गोटे अननोन रेजिस्टेंस तुम बाहर करिवो S टा गोटे वेरिएबल रेजिस्टेंस तुम हाथ रे अछि टक 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 करी चेंज करिवो गोटे रियोस्टाट यूज करा जाय एठी गोटे बैटरी लागिछ करंट डिवाइड होची एठी तुमे एठी गोटे गाल्वानोमीटर लगेछ बिटवीन B and D तुमे एटा को एमिति टक टक चेंज चांस करी करी देखिबो केते बेले गाल्वानोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देखौची ए बाटा देखि किछि करंट जाउनी त माने एटा नाही सो दैट कोन होची ए बी सी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस जेति की डी सी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस जेति की सी टा त गोटे कांस्टेंट पॉइंट बी आउ डी रो पोटेंशियल समान हो जाउची सो दैट बी डी भीतर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाउची सो देयर इज नो करंट फ्लोइंग सो ए सिचुएशन रे हमें यार पोटेंशियल डिफरेंस संगे यार पोटेंशियल डिफरेंस समान कर देले उन डेरिवेशन करिछि तुमे पाइबो गोटे रिलेशनशिप P by Q is equal to R by S P Q they are known R S R टा तुमरो अननोन आ S टा मध्य तुमे चेंज चांस करिक सब जानिछ तुमे ता भितर गोटे जे कोनसी गोटे अननोन थिले बाहर जीवो P Q is equal to R S सो जदि P by Q is equal to R by S हेजी गोटे सर्किट रे त माने एटा नाही एटी जीरो जाउची ही जाउची जदि P by Q is equal to R by S हेची गोटे कोनोसी गोटे सर्किट रे मझरे गोटे जॉइन हेची त माने ए बैटरी किछि करंट जाउ नाही सेम थिंग यू विल फाइंड हियर सेम थिंग यू विल फाइंड हियर यस देखो सबुडा को 4 मार्क करो एटा गोटे पॉइंट 4 by 4 is equal to 4 by 4 एटा PQ एटा RS 4 by 4 is equal to 4 by 4 थणो एपटे किछि करंट जाउनी तो एटा को बाहर कर दियो एटा को भूली जाओ नाही हला नाही भाबिले व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अनुसार खाली ए दीटा अछि 4 4 8 4 4 8 4 ए तीनटा जगर पैरेलल कनेक्शन 1 by 8 plus 1 by 8 plus 1 by 4 1 by 2 so the equivalent resistance between these 2 points is 2 ohm very simple you have to use the Wheatstone bridge principle to say that this wire is as if it is not at all working anything that is 4 ohm ro kichi मान ही नहीं कारण P by Q is equal to R by S हे गला माने इथरे आसुनी किछि Wheatstone bridge principle. Now I have explained the Kirchhoff's current law in a better way. I have given all these files. Today's program रे तुम बहुत जिनस तुम पाइबो एगुडा को सबुडा को फाइल एठी देइची परमिटिविटी ऊपर हाउ परमिटिविटी बढ़िले इलेक्ट्रिक फील्ड मते थरे प्रीतम दास पचारथिले सर इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल कोन ताकू भी बुझीची आराम रे बुझी जीवो तमे इलेक्ट्रिक फील्ड बाप यू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नुहे सेटा को बुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ताको कहते इलेक्ट्रिक फील्ड स्टाइल रे फिजिसिस्ट माने कहते इलेक्ट्रिक फील्ड ताको बुझे आउ इप्सिलॉन इज वेरी इंपोर्टेंट दैट परमिटिविटी जदी बढ़ी जीवो ताहले फील्ड कमी जीवो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कमी जीवो किंतु कैपेसिटेंस बढ़ी जीवो से कैपेसिटेंस कोन वेरी सिंपल वे रे मु कहिछि तब तक पढिबो आउ ए स्लाइड रे मु व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल रो डेरिवेशन देछि आ एथिरे टर्मिनल वोल्टेज बा प्रांतीय विभवांतर जतिकी ईएमएफ जोगुची गोटे बैटरी सबुतक आसुनी किंतु किछि बाट मारण सेठी इंटरनल हीटिंग इफेक्ट होची बैटरी भितरे तार गोटे इंटरनल रेजिस्टेंस अछि स्मॉल आर सो एक्चुअल प्रांतीय वोल्टेज जो आमे पाउचे इज नॉट इक्वल टू ई आमे सिना कर दोचे प्रिज्यूमिंग दैट देयर इज नो इंटरनल लॉस किंतु जोटी इंटरनल वोल्टेज देइथिबो ताहले यू कैन फाइंड आउट ईएमएफ माइनस आई सेही करंट इनटू द इंटरनल रेजिस्टेंस आभ्यंतरिक प्रतिरोध कले जाईकरी टर्मिनल वोल्टेज बारिबो तार मध्य किछि करछि प्रॉब्लम देछि तो आज का सेशन एठी शेष हला एवं केमति लागिला त माने फीडबैक दबो आउ जदि तमे अछ ब्रह्मा जस्ट गिव योर फीडबैक केमति लागिला तुमको एवं अन्य माने मु बुझुची जो माने टिके प्रिपेयर करिनो तुम टिके माडी पड़िवो यू आर फीलिंग अ लिटिल अनइजी
don't mind. तुमे जदि actually रखिबो गोटे higher goals like be an IIT in higher rank or गोटे researcher हबो तुमको advance study करियो को पड़िबो मु रब्बार को रब्बार करिवि only because अन्य मानकर किछि नथिबो so maybe coming Sunday दिन हमर आरो प्रोग्राम टा हबो एवं तमर वर्तमान जेतु समय चली जाईछि आउ मु समय देई परिबिनी आई एम रेस्ट्रिक्टेड my voice specialist not to use my voice above 1 hour but you keep on writing to me I will respond to you and केमती लागिला कोन लागिला मते feedback देले I will be motivated and in fact सुप्रभा नायक सर बुझिली जे एबे अच्छा की देवी दत्त अच्छा की पळेलानी पंडा सर कौन कहिबे की Yes sir, I want to tell something else. Yes Sir, I first of all I am very thankful to you that very nicely you have taught all these things. Okay, thank you and it is very informative and also interactive session for the students. Okay, those who are appearing standard 10. Okay, no it is not and standard 10 all of them are standard 12 these are standard 12 whatever also, we standard discuss these 10 are not and standard 10 10 12 also, because the same things they are reading in the their books. Okay, and your explanation, your strategy and other things I will appreciate sir. Definitely it will be better, and if this program will continue, definitely more and more students will participate and they will get the very nice things from this. And hopefully when I saw that you have sent the message, you in the Zoom platform you are doing this one, then I was thinking that yes, I will participate in it what sir is telling. Let us talk to the sir and discuss. Okay sir, very nicely I have seen you have made it properly, and thank you very much, thank you. And whenever there will be such programs I will be there, and definitely sir, from my side I'm very much thankful to you, and wish you all the best for the coming session also. thank you so much panda sir thank you so much that means a lot for me आउ कि हाथ टेकिछि ओम साई lower your hand yes sir कौन कहइबो sir pdf जगह sir अपन जति one note file टा डायरेक्टली दे देबे तो सर गोटे फाइल रे सर pdf जगह रे सर जति अपन डायरेक्टली one note file टा description रे रख देबे कोन तान सर गोटे फाइल भितरे सब रहि जिवो नै आजि देखिबो आजि सब ठीक पाइबो सब आजि अवश्य पुराना गुडाकर इंग्लिश मु बेसी पाउनी दैट इज द यू नो आई वाज मेकिंग स्लाइड्स फॉर ओडिया मु इंग्लिश रे भाबुची किंतु ओडिया रे ट्रांसलेट करूची सो आई कुड नॉट फाइंड द फाइल्स इन इंग्लिश देयरफॉर यू मस्ट हैव फेस्ड सम डिफिकल्टी बट इफ यू watch again and again, and I have given you the book H.C. Burma book, which is my source of understanding H.C. Burma of class 9 and 10. But of course, with my experience of teaching to my own children, one of whom is a very high position IIT, because I have taught physics up to class 10. So with that, and also in uranium, we have visited to so many places, all the districts of Odisha, where we used to take the help of physics experts. ସେମାନେ ତ କ୍ଲାସ୍ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ ପଛରେ ବସେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଫେସର ମାନେ ଫିଜିକ୍ସର ମୁଁ ପଛରେ ବସେ as a student. I have learned many things from them, and so my passion grew for helping students up to class 10. But no, I know my limitations. I won't go to class 11 and 12. You know, my expertise is chemistry. Okay, bye bye, take care, bye.